Good morning, students. Today I am going to start chapter number 1, Computer Networks. What is a computer network? A network consists of two or more computers that are linked in order to share resources, exchange files और allow electronic communications. एक नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. It means they can send the information to each other. The computers on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites, or infrared light beams. Computers can be connected with each other in two possible ways. With the help of cables or wires, that kind of connection is called wired connection, and the other type of connection without the help of cables or wires. With the help of satellites and waves, that type of connection is called wireless connection. Some examples of wireless connection are Bluetooth, Wi-Fi. The full form of Wi-Fi is wireless fidelity. What is the need of a computer network? It helps us in so many things. First is file sharing. जब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, then they can send the file to each other. They can share the files. Computer which is present in the file which is present in the one computer can be used into another computer. Second, resource sharing. What are resources? स्कैनर, प्रिंटर, ये सब जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं. With the help of network, these resources also can be shared. Communication and collaboration. Computers can communicate with each other with the help of network. Remote access. What is remote access? When computers are present far away from each other, then also they can access each other with the help of network. Data protection. A user has to enter username and password before accessing information in the network, so it makes it safer to use. Types of network: local area network, wide area network, and metropolitan area network. What is local area network? LAN. It is a network that connects the computer within a small geographical area. जो एक छोटे से एरिया में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड लैन. फॉर एग्जांपल, किसी भी बिल्डिंग में या ऑफिस में अगर कंप्यूटर्स कनेक्टेड है तो वो लैन के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं. Then wide area network, WAN. Wide area network connects the computers into a large area. For example, it can connect the computers worldwide. पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं. देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन एक ऐसा नेटवर्क है जो एरिया कवर करता है वो लैन से ज़्यादा होता है और वैन से एरिया जो कवर करता है वो वैन से कम होता है. तो इट इज़ समवेयर बिटवीन लैन एंड वैन. फॉर एग्जाम्पल, in a city or in a town, it can connect the computers. Then network topologies. What is a network topology? Maps of how the physical or logical paths of network devices connect. जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं नेटवर्क में, उनके बीच में जो फिज़िकल पाथ होता है, उस पाथ को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जो मैप मिलता है दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी. तो जो मैप होता है जिसमें हमने ड्रॉ किया है कंप्यूटर्स को और उनके बीच में जो पाथ है, उसमें जो पाथ है अगर हमने वो ड्रॉ किया है, उस मैप को नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी. फर्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी. In star topology, what happens? There is a switch you can see in the figure. This is located in the middle. A switch. All the computers they are connected to a switch. जो मिडल में लोकेटेड है वो एक स्विच है. सबके सब कंप्यूटर स्विच के साथ कनेक्टेड होते हैं. एंड इफ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग देन इट विल नॉट अफेक्ट द होल सिस्टम. सिर्फ वो वाला पार्ट ही वर्क नहीं करेगा, बाकी पूरा सिस्टम वर्क करता रहेगा.
everything is controlled by the switch. In this star topology, switch is the main handler. So what is the problem with this topology? What is the disadvantage? If switch stops working, then the whole system fails, because everything is controlled by the switch, और स्विच ही वर्क करना बंद कर दिया तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा. Then the next topology is ring topology. You can see in the figure the computers, they are connected in such a way that they are forming a ring. एक रिंग बना रहे हैं सब कंप्यूटर्स, इस तरीके से कनेक्टेड हैं. So that type of topology is called ring topology. See, कंप्यूटर 1 इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 2 कंप्यूटर 3 के साथ कनेक्टेड है, फिर थर्ड फोर्थ के साथ कनेक्टेड है, फोर्थ फिफ्थ के साथ कनेक्टेड है, एंड देन फिफ्थ अगेन फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है, एंड दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड रिंग. But in this type of topology, if one computer fails, the whole system will stop working because they are connected in such a way. Next is bus topology. In bus topology, all the computers, they are connected to a bus. Bus is a cable. सब computers एक bus एक cable के साथ connected हैं. In this type of topology also, if one computer fails, then it will not affect the whole system. Next topology is mesh topology. In mesh topology, all the computers, they are connected with each other. Suppose there are 4 computers in a system, then first computer will be connected to second, third, fourth, all the computers. Each and every computer is connected with each other. What is the advantage of this topology? It is very fast. And what are the disadvantages? The maintenance is very difficult and it is very expensive. Mesh topology, it is very efficient, but it is very expensive. So this was all about the topologies. Topology is a diagram, is a map that shows all the connections of a network. That's all for today. Stay home, stay safe. Goodbye.